गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सिविल एविएशन सेफ्टी रूल्स। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिगो की एक फ़्लाइट पर एक पैसेंजर ने एयरक्राफ्ट के पायलट को फिजिकली असॉल्ट किया था। तो जो है उसी के ऊपर जो है सिविल एविएशन सेफ्टी रूल्स क्या कहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हैंडलिंग ऑफ अनरूली पैसेंजर्स के लिए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स जो है वो बनाई गई हैं डीजीसीए द्वारा। डीजीसीए क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिविल एविएशन सेक्टर को डील करती है। एक स्टेचुटरी बॉडी है ऑफ कोर्स। और सिविल एयर रेगुलेशंस, एयर सेफ्टी, एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड्स ये सब एनफोर्स करने का काम करती है। अनरूली बिहेवियर को कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि अगर लिकर या ड्रग्स लिए हुए हैं तो अनरूली बिहेवियर कर रहा है कोई पर्सन, स्मोकिंग कर रहा है, पायलट के इंस्ट्रक्शंस को ओबे नहीं कर रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, फिजिकली थ्रेटन कर रहा है, जो है क्रू की जो है ड्यूटीज़ को उनको डिस्चार्ज नहीं करने दे रहा, सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट को एंडेंजर कर रहा है। ठीक है, तो ये सब अनरूली बिहेवियर के कैटेगरी में आते हैं। प्रोसीजर क्या होता है कि जब भी एयरलाइन के पास ऐसे कोई कंप्लेंट आती है तो उनको एक इंटरनल कमेटी को जो है ये कंप्लेंट देनी होती है, जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज उसके चेयरमैन होंगे, एक डिफरेंट एयरलाइन के रिप्रेजेंटेटिव भी उसके मेंबर होंगे, पैसेंजर्स के एसोसिएशन का भी एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें मेंबर होगा जो कि कंज्यूमर एसोसिएशन का मेंबर होगा। ठीक है, इंटरनल कमेटी जो है वो 30 दिन के अंदर डिसाइड करेगी इस मैटर के ऊपर, और अब ये बताएगी कि कितने टाइम के लिए इस अनरूली पैसेंजर को बैन किया जाएगा फ्लाई करने से। ठीक है, कमेटी का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा उस एयरलाइन के ऊपर। अब कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह की सज़ा दी जाएगी। लेवल वन में मतलब उस पर्सन ने कुछ ऐसे जेस्चर्स किए थे सिर्फ, तो उसको हम लेवल वन मानेंगे। लेवल टू में मतलब फिजिकली अब्यूजिव बिहेवियर था। लेवल थ्री में तो लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर उसने कर दिया, तो उसको हम बहुत ही सीरियस कैटेगरी में मानेंगे। ठीक है। तो पेनल्टीज़ क्या होती हैं? ठीक है, तो मतलब एक जो है 30 दिन के अंदर डिसाइड करना होता है इंटरनल कमेटी को कि ये पैसेंजर जो है इसको कितने टाइम की सज़ा देनी है, इसको नो फ्लाई लिस्ट में कितने टाइम के लिए डालना है। और बाकी कैरियर्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं। मतलब अगर एक पर्सन को समझ लो 1 साल के लिए बैन लगा दिया कि वो फ्लाई नहीं कर सकता, तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी कैरियर्स भी कहें कि हम भी इसे नहीं जो है वो फ्लाई करने देंगे। तो बैंड इंडिविजुअल के पास भी जो है ऑफ कोर्स अपील करने का मौका होता है 60 दिन के अंदर एपीलेट कमेटी के पास, ताकि वो अपने बैन को हटवा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023। सोशल इश्यूज और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एसर 2023 की रिपोर्ट में देखा गया है कि 43% जो चिल्ड्रन है 14 से 18 के एज ग्रुप के, वो इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं पढ़ सकते हैं। और जो है 25% तो जो है क्लास 2 लेवल के वो बच्चे हैं जो अपनी रीजनल लैंग्वेज भी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एसर जो है एनजीओ प्रथम जो है रिपोर्ट निकालता है। 6 से 14 साल के बच्चों के जो है स्टडी सर्वे किया जाता है। 2005 से ये रिपोर्ट निकाली जा रही है। स्कूल एनरोलमेंट, अटेंडेंस, रीडिंग, अरिथमेटिक एबिलिटीज़, ये सब ट्रेंड्स जो है ये ट्रैक करता है। 28 डिस्ट्रिक्ट्स में 26 स्टेट्स के 28 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सर्वे किया गया है। 4 बेसिक पॉइंट्स को इसमें कवर किया गया सर्वे में कि बेसिक रीडिंग, मैथ्स और इंग्लिश की एबिलिटीज़ कैसी हैं, बेसिक स्किल्स से लेके एवरीडे कैलकुलेशंस की एप्लीकेशन कर पाते हैं बच्चे या नहीं कर पाते हैं, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग कैसी है रिटर्न इंस्ट्रक्शंस की, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस जो है वो कर पाते हैं रियल लाइफ में कि नहीं। ठीक है। तो अब इसमें फाइंडिंग्स अगर हम देखें तो इसमें ये देखा गया है कि लगभग एक क्वार्टर जो है बच्चे क्लास 2 लेवल के वो अपनी रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते हैं। और लगभग ऑलमोस्ट हाफ 45% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में सेंटेंस नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स भी जो है एक बिग चैलेंज है। मोर देन हाफ ऑफ सर्वे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिंपल 3 डिजिट बाय 1 डिजिट की डिवीजन प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पाए। 45% जो यूथ है वो बेसिक अरिथमेटिक प्रोफिशिएंसी जो है वो जो है कर सकता है। और बाकी जो है वो अभी उनके पास लो लेवल ऑफ फाउंडेशनल न्यूमरेसी है। ठीक है, अब इसमें ये भी देखा गया
कि मोर देन हाफ ऑफ द यंग पीपल जो हैं वो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हैं, और 89% के आसपास जो बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफोन है घर पे, और 92% जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मेल्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ कर सकते हैं एज स्मार्टफोन एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। सोशल मीडिया पर भी 90.5% यूथ जो है इस एज ग्रुप में वो यूज़ करता है सोशल मीडिया को, लेकिन हाफ ऑफ देम उन्होंने बोला कि उनको ऑनलाइन सेफ्टी सेटिंग्स के बारे में नहीं पता है सोशल मीडिया की। ठीक है, तो एसर रिपोर्ट जो होती है वो एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर डेफिशिएंसीज़ को जो है पॉइंट आउट करती है, लर्निंग आउटकम्स एट हायर लेवल जो है उसको उसमें गैप्स को अंडरस्टैंड करती है, ह्यूज स्किल डेफिसिट जो एडोलेसेंट्स में चल रहा है उसको हाईलाइट करती है ताकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उसके ऊपर बना सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चांगे 6 मिशन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि चांगे 6 सैंपल रिटर्न मिशन जो है वो ट्रैक पर है, और फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में वो वहाँ पर लैंड कर जाएगा मून पर। चांगे 6 मिशन जो है एक प्लान लैंडर है जो कि लूनर साउथ पोल से सैंपल्स लेकर आएगा, और जो है अर्थ पर लेकर आएगा। ऑफ कोर्स लगभग 2 किलो जो है वो लूनर सैंपल्स लेकर आएगा, और ये सिर्फ चाइना का ही मिशन नहीं है बल्कि इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी और फ्रेंच स्पेस एजेंसी ने भी जो है इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। चांगे 6 जो है इसमें लैंडर और रोवर दोनों ही हैं, और जो रिटर्न सैंपल्स हैं वो बाकी की ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को भी स्टडी के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशियन बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ने 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस जो है उसको इनाग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। तो ये 1970 में उलान बटार मंगोलिया में एक वॉलंटरी मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुई, जिसमें फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म जो है जो कि मॉन्क्स थे इसके जो है जिन्होंने इसको लॉन्च किया या फाउंड किया। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जो है उलान बटार में ही है मंगोलिया में, और जो सुप्रीम हेड हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। सुप्रीम हेड ऑफ मंगोलियन बुद्धिस्ट जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सल पीस, हार्मनी, कोऑपरेशन अमंग पीपल इन एशिया कैसे प्रमोट किया जा सके उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस की जाती है। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत सारी कंट्रीज़ का होता है, और इवन जो ABCP है इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में सिंस 1988। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाडनगर। आर्ट एंड कल्चर के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो रिमेन्स ऑफ 2800 ईयर ओल्ड ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डिस्कवर किए गए हैं रिसेंटली गुजरात के वाडनगर में। वाडनगर एक टाउन है, म्यूनिसिपैलिटी है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट की, नॉर्थ गुजरात में। इसको वृद्धनगर, अनंतपुर और नगर भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूसली ये हिस्टोरिक लैंडस्केप रही है, ये ट्रेड नेटवर्क रही है वेस्टर्न इंडिया का, और ये पुराण में भी मेंशन है, और जो चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सैंग थे उनके भी जो है ट्रैवलॉग्स में मेंशन की गई है सिटी। ठीक है, ये पूरा का पूरा टाउन जो है ये एक एंशियंट माउंट के ऊपर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं श्रेष्ठ स्कीम। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो CBSE जो है उन्होंने रिसेंटली इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि रेजिडेंशियल प्राइवेट स्कूल्स जो कि श्रेष्ठ स्कीम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ स्कीम क्या है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ये स्कीम जो है बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फ्रॉम SC कम्युनिटीज़ देना चाहती है, स्कॉलरशिप देना चाहती है SC कम्युनिटीज़ को, ताकि वो प्राइवेट और NGO रन रेजिडेंशियल स्कूल्स में क्लास 9 से 12 तक पढ़ सकें। लगभग 3000 स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 9 से 11 जो है वो उनको हर साल जो है एडमिशन दिया जाएगा, और गवर्नमेंट इसमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कोलैबोरेट करेगी। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सबसे पहले श्रेष्ठ स्कूल्स जो है वो बेस्ट CBSE या स्टेट बोर्ड अफिलिएटेड प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और एक फिर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट लेकर जो है बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा 9 से 12वीं क्लास तक के। ठीक है, सेकेंड मोड में NGO और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रन स्कूल्स भी जो है उनको भी जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। स्टूडेंट्स जिनके पेरेंटल इनकम लेस देन 2.5 लाख है और वो SC कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। इस स्कीम में ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी ये सब जो है स्टूडेंट्स की कवर की जाएगी। स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो कई रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जो है स्कूल में चुन सकते हैं, कई रेंज ऑफ स्कूल्स भी रादर जो है वो अपने मेरिट के बेस पर चुन सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कनत सिस्टम। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीका के ड्राई एरियाज़ में सीरियस वाटर शॉर्टेजेस हो रही हैं, तो इसलिए एक एंशियंट सिस्टम
एक्विफर्स से वाटर ड्रॉ करने का कनत सिस्टम जो है वो एक हेल्प कर सकता है। तो कनत सिस्टम में क्या है, एक टाइप ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम है, एरिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में ये यूज़ किया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि अंडरग्राउंड माउंटेन वाटर सोर्सेज जो कि अपर रीचेस ऑफ एल्यूवियल फैंस या फिर वाटर डाउन या चैनल्स के जो है डाउन हिल में ट्रैप्ड हैं, उनको थ्रू जेंटली स्लोपिंग टनल्स जो है वो एक तरह से टैप किया जाता है। और ये कनत जो है ये कई सेंचुरी से यूज़ किया जा रहा है एरिड और सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका में। सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत सस्टेनेबल है क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है इसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल्स के थ्रू, स्ट्रीम्स के थ्रू जो है, टनल्स के थ्रू जो है पानी निकाल रहे हो। वाटर जो है वो इवेपोरेशन को भी मिनिमली जो है वो लूज़ हो रहा है, ठीक है। सोशल कोहेशन भी हो रही है क्योंकि बहुत सारे तरह के जो है लोग इसमें काम करेंगे इसको जो है पानी को निकालने में। लाइफ स्पैन भी जो है एज़ कम्पेयर टू डीप वाटर वेल इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वाटर भी जो है, जो माउंटेन से आ रही है वो एज़ कम्पेयर टू जो प्लेन्स का वाटर है उससे बेटर होती है, कम सैलिनिटी होती है और क्रॉप्स और लोगों के लिए भी ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईसीएमआर ने प्रोसेस शुरू कर दिया है कि जो नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट जो है उसको कैसे जो है रिवाइज़ किया जा सके, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स से सजेशन मांगे गए हैं कि कोई एडिशन या डिलीशन करनी है अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट में, तो वो फरवरी तक बता सकते हैं। तो नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट क्या होती है, बेसिकली मोस्ट बेसिक टेस्ट जो वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारी कंट्री में है, चाहे विलेज लेवल पर, सब हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ या वेलनेस सेंटर्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पर होनी चाहिए, उनकी एक लिस्ट है, ठीक है। 2019 में सबसे पहली बार ये लिस्ट निकाली गई थी आईसीएमआर द्वारा। और इसके जो है इसको इंडिया ने सबसे पहली कंट्री बनी थी जो नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट जिसने निकाली थी। 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया था कि एक नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट होनी चाहिए, ताकि जो है इन वाइट्रो डायग्नोस्टिक जो सेंटर्स हैं वो हर तरह के हेल्थ केयर पिरामिड पर, हर तरह के टेयर के हेल्थ केयर पिरामिड पर बनाए जा सकें, ठीक है। तो समझ लो कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर डिसीज़ होती है, तो हमको वहाँ पर वो डिसीज़ जो है उस लिस्ट में डालकर वहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोलने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे ही जो है उसके बेसिस पर ये लिस्ट तैयार की जाती है। एसेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट वो टेस्ट हैं जो कि प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की उसको कोशिश की जाती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is civil aviation safety rules. This topic is important for your governance section. So a passenger who was boarding the Indigo flight recently physically assaulted the aircraft's pilot because he was making an announcement regarding delays. So the airline has declared that passenger unruly, and further action will be guided by civil aviation requirements on handling of unruly passengers. Okay, so CAR is issued by Aviation Watchdog DGCA. DGCA, we know that it is a regulatory body of Government of India in the field of civil aviation, and it is a statutory body under the Aircraft Amendment Act of 2020. It is responsible for regulation of air transport services and enforcement of civil air regulations, air safety and airworthiness standards. So what is an unruly behavior? So as per the guidelines, unruly behavior includes consuming liquor or drugs resulting in unruly behavior, smoking, not obeying pilot's instructions, threatening or abusing or using abusive language, physically threatening and or using abusive behavior, intentionally interfering with the duties of the crew, endangering the safety of aircraft and those on board. So these are certain uh, categories of unruly behavior. So what is the procedure when a certain type of incident is reported? So when the airline receives such a complaint of unruly passenger behavior, then from the pilot in command, it must refer the complaint to an internal committee which should include a retired district or sessions judge as chairman,
a representative of a different airline, and a representative of passengers association also. Okay, so the internal committee is required to decide this matter within 30 days, and the committee shall also decide the duration for which this unruly passenger will be banned from flying, and the committee's decision shall be binding on the airline also. So there are three categories or three levels of disruptive behavior that unruly passenger can make. First level is of course when only physical gestures have been made, verbal harassment has been done, and level 2 is a serious one in which physically abusive behavior is seen, like pushing, kicking, hitting, or even sexual harassment. In level 3, life threatening behavior is done, uh, including damage to aircraft operating systems also. So of course the penalties for level 3 behavior would be very high as compared to level 1. Okay, so what are the penalties? So the committee has to decide within 30 days regarding the penalty, and for how long that particular passenger would not be allowed to fly, and we put under the no fly list. Okay, so other carriers are also given the option to ban that passenger from flying. So the banned individual also has the option to appeal against that order within 60 days to an appellate committee. Okay, so as to withdraw that order of ban, or ban on him from flying. Okay, so the next topic is annual status of education report 2023. This topic is important for your governance section. So according to ACER 2023, nearly 43% of the children in 14 to 18 age group cannot read sentences in English, while among their rural counterparts, only about 25% of them struggle to read at class 2 level text in their respective regional language. Okay. So ASER, the annual status of education report, is released by NGO Pratham, through which they have been surveying children aged 6 to 14 since 2005 to track trends in school enrollment, attendance, reading, and arithmetic abilities. So ASER 2023 is based on a survey conducted in 28 districts across 26 states, and they reach out to more than 35,000 youth in the 14 to 18 age group. The youths were surveyed on 4 points: basic reading, maths, English abilities, application of basic skills to everyday calculations, reading and understanding written instructions, financial calculations which need to be done in real life. So, what are the findings? So, we have observed through this survey that about a quarter of these surveyed students could not read at class 2 level textbook in their regional language, and a little less than half of them could not read sentences in English. Basic mathematics remains the big challenge also. More than half of the surveyed students could not solve a simple 3 digit by 1 digit division problem. 45% of the youth in the surveyed group have basic arithmetic proficiency. The rest need to catch up as there are low levels of foundational numeracy observed. Okay, so the survey also showed that more than half of the young people in this age group were enrolled in the arts and humanities stream. About 89% of those surveyed had a smartphone in the house, and 92% of them knew how to use it. Only, I'm sorry, males were more than twice as likely to own their own smartphone than females. And the survey also found that 90.5% of the youth in this age group reported having used social media. And of all the youth who used social media, only half of them were familiar with online safety settings, which were included in the survey. Okay, so what is the significance of this survey? For nearly 2 decades, these reports have consistently pointed to deficiencies among children in elementary school, and in learning outcomes at higher levels also. So this finding points out to huge skill deficit among adolescents, and many a few years many of them are only a few years away from entering the job market. So for that, the government needs to reorient its policies according to enhance the basic foundational numeracy and skills. Okay, so the next topic is Chang'e 6 mission. This topic is important for your science and tech section. So China's National Space Administration has recently announced that the Chang'e 6 sample return mission is on track to land on the surface of the moon in the first half of 2024. Chang'e 6 mission is a planned lander designed to return samples from the lunar south pole, and it will collect samples from the lunar surface and return it to the earth
Of course, it will bring back up to 2 kilograms of lunar samples, and uh, this Chang'e 6 mission is not just the China's mission, not just China's mission, but also an international collaboration between European Space Agency, French Space Agency, and Chinese Space Agency, of course. So Chang'e 6 will consist of both a lander and a rover, and the returned samples will also be made available to the global scientific community for study. Okay. So the next topic is Asian Buddhist Peace Conference. This topic is important for your art and culture section. So Indian Vice President has recently inaugurated the 12th General Assembly of the Asian Buddhist Conference for Peace in New Delhi. So this Asian Buddhist Conference for Peace was founded in 1970 in Ulaanbaatar, Mongolia, as a voluntary movement of followers of Buddhism with both monastic and lay members. So, of course, the aim is to bring the efforts of Buddhists in support of consolidating universal peace, harmony, and cooperation among people in Asia. It is currently headquartered at the Ganden Tengling Monastery in Ulaanbaatar, Mongolia, and the supreme head of Mongolian Buddhist is the president of it. Okay, so it also drew active participation from several other countries apart from India and Mongolia, and ABCP has also been registered as an observer to the UN's Economic and Social Council in 1988. So the next topic is Vardanagar. This topic is again important for your art and culture section. So the remains of a 2800-year-old human settlement have been recently discovered in Gujarat's Vardanagar. Vardanagar is a town and municipality in the Mehsana district of North Gujarat. So it is a historical city. It was known by various names like Vridhanagar, Anandpur, Anarthpur, and Nagar. And this town represents a continuously evolving historic urban landscape which played a major role in the hinterland trade network of Western India. It is also mentioned in the Puran and also in the travelogue of the great Chinese traveler Hyun Sang. So this whole ancient town of Vardnagar is built over an ancient mount. So the next topic is Shrestha scheme. This topic is important for your governance section. So CBSE has recently issued instructions for residential private schools interested in joining the Shrestha scheme. Shrestha is the scheme for residential education for students in high schools in targeted areas. The aim of the scheme is to provide access to the best private residential schools for meritorious students from SC communities. It will provide scholarships to meritorious students from SC community to study in private and NGO-run residential schools for classes 9 to 12. And the scheme is expected to provide admissions to about 3,000 students in class 9 and 11 each year. So the scheme will also collaborate with voluntary organizations. And who will be implementing this scheme? The Department of Social Justice and Empowerment. First, there will be Shrestha schools, which will consist of best CBSE and state board affiliated private residential schools, and admissions into these schools would be done through an national entrance test, and selected students will be offered the admission to these schools in classes 9 through 12. The second mode is, of course, using the services of NGO and voluntary run organization run schools and hostels. Okay, students whose parental annual income is less than 2,50,000 and those who belong to SC communities will be eligible to participate in this scheme, and this scheme will cover the tuition fee, the hostel fee, and the mess fee for qualifying students. Okay, the students will also be allowed to choose from a range of schools based on their merit. So the next topic is Kanat system. This topic is important for your environment section. So some of Africa's dry areas which are facing serious water shortages due to minimal rainfall can use the ancient system of drawing water from aquifers, also known as the Kanat system. It is basically an ancient type of water supply system which is still being used in arid regions of the world. Under this system, the underground mountain water sources which are trapped in and beneath the upper reaches of the alluvial fans and the channels the water and then this water is channeled through downhill through a series of gently sloping tunnels using, of course, gravity. So Kannats have been used for centuries in arid and semi-arid parts of North Africa. It is known by a variety of names. Fogara in
North Africa, Falaj in Oman, Karis in parts of Asia. This system is still used in Iran and Afghanistan also, chiefly for irrigation. So, what is the significance of this system? This is sustainable because it works with gravity and no electricity is needed. Water lost to evaporation is also minimal because, as compared to surface water supplies. It also fosters social cohesion because many people with different skills are involved in maintaining the system. The lifespan of the system is also higher or bigger than that of a deep water well. The quality of water which comes from the mountains is also much better than water on the plains. It has low salinity, so that's why it is better for crops and people also. Okay, so the next topic is National Essential Diagnostic Test. This topic is important for your governance section. So ICMR has recently begun the process of revising the current National Essential uh, Diagnostic List, and it has also invited relevant stakeholders to offer suggestions on adding or deleting diagnostic tests to the current list by the end of February. Okay, so National Essential Diagnostic List is basically the list of essential and most basic tests which should be made available at various levels of healthcare facilities in the country, including at the village level, in sub health centers, health and wellness centers, and primary health centers. ICMR has released the first NEDL in 2019 to make the availability of diagnostics an essential component of our healthcare system. Okay, so this list includes general laboratory tests to a broad range of common conditions for the diagnosis of diseases. India is the first country to release this NEDL, which was actually suggested or recommended by WHO in 2018 for the development and implementation of this list. Okay, so what are these essential diagnostic tests? So basically, these are priority healthcare needs of it caters to the priority healthcare needs of the population, and these tests are selected with due regard to disease prevalence and public health relevance, evidence of efficacy and accuracy, and comparative cost effectiveness. So, for example, let's suppose that in a state there is a Japanese encephalitis, which is very common in that particular area. So, of course, that particular disease would also be covered into the essential diagnostic test at the local level. Okay. Similarly, this list is prepared for the national level, keeping in mind the local conditions also. Okay. So these were the topics for today, and please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.